Hello everyone, welcome to VRC with Gaurav. In this video, we are going to pick up XAT 2023 का थर्ड आरसी पैसेज. ठीक है, पैसेज 1-2 ऑलरेडी डन. इसका जो पोएम भी पूछा गया था, दैट इज आल्सो डन. If you haven't checked those out, please go take a look at it. Also, this is another video in a video series, video solution series, Road to XLRI. So everybody who is preparing for XAT and watching this video, all the very best for your exams. Now let's go take a look what the passage is about. ठीक है. As usual, I recommend that you pause the video here, use the timestamps in the description box to go to the questions, jot down the answers. Also, keep a timer running in parallel from the time you start reading the passage and also solve the questions. Always a good idea to keep a track of your timings. And now let us see what the passage is about. ठीक है, तो चलो, straightforward. Whenever, I mean, as soon as you have started reading the first couple of sentences or the first three sentences itself, you can see that the passage is something abstract in its genre. ठीक है, और एक बात भी क्लियर हो जाती है that the text of the passage is sourced from some other बड़ा source, maybe some बड़ा सा article or maybe even a book, और उसमें से बीच का कोई एक हिस्सा उठाया, because the first sentence itself starts off by saying कि interpretation in our own time, however, is even more complex. तो इस पर से एक हल्का सा हम जजमेंट तो लगा ही सकते हैं that the text, that the paragraphs preceding this first sentence of the passage, they must be talking about interpretation in historical times, in olden times, in the centuries gone by, वगैरह वगैरह. And now the author has moved on to discussing कि interpretation, ये जो एक्टिविटी है आज के जमाने में कितनी कॉम्प्लेक्स है या कितनी सिंपल है, whatever. ठीक है, तो चलो, another feature of the passage, and I believe most of you must have experienced it, 100% clarity नहीं मिलती है पूरे narrative को लेकर. What we can sense is that cannot expect 100% complete understanding. 80% sentences, 80% of the text you can understand. ठीक है, कुछ कुछ रहेंगे जो थोड़े बाउंसर जाएंगे, and it is completely okay. ठीक है, चलो, पहला सेंटेंस तो यार समझ में आ जाता है that author is saying आज के तारीख में this activity interpretation is very complex. ठीक है यार, चलो कोई बात नहीं. Now what exactly interpretation of what, ये अभी फिलहाल क्लियर नहीं हुआ, जाने दो, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं. सेकेंड सेंटेंस जाना शुरू होता है बाउंसर, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ वर्ड्स रिटन ओवर हियर जिनके स्टैंड अलोन लेवल पे हम मीनिंग भले ही समझते होंगे, बट विथ दिस कॉन्टेक्स्ट, आधी अधूरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द जॉनर, व्हाट द सॉरी जॉनर नहीं, व्हाट द टॉपिक, व्हाट द फोकस इज ऑन, तो ये सेकंड सेंटेंस का अंडरस्टैंडिंग बिकम्स वेरी फ्लेकी, बिकम्स वेरी सुपरफिशियल. वी माइट बी अवेयर अबाउट वर्ड्स लाइक कंटेम्पररी, zeal which means passion, पाइटी का मीनिंग भी हम जानते होंगे. तो बट कहीं ना कहीं सेकंड सेंटेंस कंप्लीटली आप पूरी तरीके से गारंटीड इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते. ओ, लुक एट द आयरनी ऑफ इट. ओके, पन अनइंटेंशनल. ओके, ऑल राइट. सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, क्या सेकंड सेंटेंस को हमने सीरियसली लेना चाहिए? आइडियली नॉट. नाउ I can go on a rant, do some kind of background research, and then explain second sentence in complete detail to you. But is that a job? Not really. Okay. एग्जाम में ऐसा अगर सिचुएशन आ गया तो who the hell is going to explain all this to you? You should be able to have that judgment कि second paragraph, sorry, second sentence in this case जो है हमें नहीं समझ आया, चलो कोई बात नहीं, गाड़ी रुकेगी बिल्कुल नहीं, आगे चलते हैं. Very thankfully, the third sentence is once again very easy to understand, fairly straightforward. कि ओल्ड स्टाइल जो था इंटरप्रिटेशन का, इट वाज इंसिस्टेंट, थोड़ा सा जिद्दी टाइप का था, लेकिन बड़ा रिस्पेक्टफुल. ओके, व्हाट डिड वी डू इन द ओल्ड स्टाइल ऑफ इंटरप्रिटेशन? बाय द वे, मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग. ठीक है, तो पुराने तरीके से जब ये एक्टिविटी की जाती थी, एंड आई एम सस्पेक्टिंग कि यहाँ पर टेक्स्ट की बात की जा रही है या फिर इवेंट्स दैट अनफोल्ड अराउंड यू इन द वर्ल्ड, तो ओल्ड स्टाइल के जरिए, ओल्ड स्टाइल में हम क्या करते थे, दैट you were persistent, you were insistent कि नहीं, मुझे मीनिंग पता करना है, आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. बट इट वाज रिस्पेक्टफुल इन द सेंस कि अगर मैं आपके सामने कोई रिटन टेक्स्ट दे दूं, एग्जांपल पकड़ के चलो कि यू आर प्रेजेंटेड विद द स्टोरी ऑफ महाभारत, ठीक है, तो आप अगर ओल्ड स्टाइल से इसको इंटरप्रेट करोगे तो यू वोंट बी डिसरिस्पेक्टफुल, यू विल बी प्रीटी रिस्पेक्टफुल, you will apply your own logic, and what would you do in that case is you would give your own interpretation on the top of the existing one. मतलब ओरिजिनली वो टेक्स्ट अगर समझ लो सेज व्यास ने लिखा है, you as a scholar, if you are interpreting it once again, you will give an additional meaning, additional version of your own thinking. तो ये हो गया ओल्ड स्टाइल का फीचर.
It erected another meaning on top of the actually existing literal one. Okay, चलो, लेकिन अब थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि न्यू स्टाइल ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है ये काफी कॉम्बैटिव दिख रही है. ओके, इट डज नॉट सीक टू बिल्ड, इट ट्राइज टू डिग इन. नहीं नहीं, हम तो गड्ढा करेंगे, हम तो बड़ी चीजें सोचेंगे, हमें हमें छुपा हुआ मीनिंग डिस्कवर करना. ओके, इट डिग्स बिहाइंड द टेक्स्ट. तो कहीं ना कहीं द वे द ऑथर हैज जॉटेड दिस डाउन दैट डजंट सीम लाइक ही सपोर्ट्स द मॉडर्न स्टाइल ऑफ इंटरप्रिटेशन. ठीक है, आप थोड़ा सा खुद का ध्यान से पढ़िए, ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस. ही इज नॉट वेरी हैप्पी विद इट. ही इज आल्सो यूजिंग अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हियर एंड देयर. फॉर एग्जांपल, when he calls the modern style as something that is destroying in nature, but on the other side he is using old style को लेकर words like respect. ठीक है, तो ठीक है, होता है, चलता है, कोई बात नहीं. Everybody has their preferences, they have the freedom to choose that. Okay, तो ये हो गया demarcation between the old style and the new style. Old style is seeks to build, new style, modern style seeks to destroy in the author's world. तो चल क्या रहा है यहाँ पर, एक एक प्रकार से हम ड्राइंग बनाकर देख सकते हैं कि what we can say is that, let's say this is the ground, this is a tree over it. Okay, and इसके अंदर में इसके रूट्स. ठीक है, so what the modern style will seek to do is they will say, modern style of interpretation, they will say ये पेड़ को हटाओ, हमको ये नीचे जो है, जो हिडन टेक्स्ट है, हिडन मीनिंग है, हिडन रूट्स है, उस लेयर पे जाना है. और उस लेयर्स के लिए some technical ज्ञान has come forward our way. Let's highlight those terms. फ्रॉइड की भाषा अगर हम यूज करते हैं तो जो भी आपको आंखों से दिख रहा है, ऑल ऑब्जर्वेबल फेनोमेना, ओके, दैट इज कॉल्ड एज मैनिफेस्ट कंटेंट. मतलब दिस ट्री, फॉर यू कैन सी दिस ट्री, so this tree is, let us call it as manifest content. Okay, but on the other hand, this roots, अगर आपको इन तक पहुंचना है तो आपको ऊपर का ट्री हटाना पड़ेगा, डिगिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके आप नीचे पहुंच सकते हो. दिस इज कॉल्ड एज लेटेंट या latent, whatever you seek to, वो वाला is your second layer. Okay, so manifest content, ऊपर के लेयर को हटा के जब आप डीपर लेयर के तरफ जाते हो तो that is called as the true meaning. You are trying to find the true meaning, you are trying to probe the roots out there, and that is called as the latent content beneath. ठीक है, फिर यहाँ पे कार्ल मार्क्स और सिगमंड फ्रॉइड का थोड़ा सा एक्स्ट्रा का ज्ञान हमें दिया है इन द फॉलोइंग सेंटेंस, बट अगर आपको वो ना भी समझे तो भी मेजर लोड वाली बात नहीं है. स्पेसिफिकली अगर कार्ल मार्क्स और फ्रॉइड के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा तो देन ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू बी अ लिटिल बिट कॉशियस कि नहीं यार, इनकी बोली हुई बातें पूरी पूरी समझी तो नहीं है. बिकॉज इफ यू लुक एट दिस सेंटेंसेस, द ओनली टेक अवे दैट वी कैन हैव फ्रॉम दिस सेंटेंसेस इज कि कार्ल मार्क्स और फ्रॉइड अलग अलग इवेंट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, एंड दे कंसिडर्ड दोज इवेंट्स एज वर्दी ऑफ इंटरप्रिटेशन. कि नहीं नहीं, लेके बैठेंगे, इसकी पढ़ाई करेंगे, इसके बारे में सोच विचार होगा, डिबेट डिस्कशन होगा, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स. ठीक है, ऑथर कहता है कि शायद शायद ये लोग ना ओवरकिल कर रहे थे. एक्चुअली दीज इवेंट्स हैव नो मीनिंग विदाउट इंटरप्रिटेशन. ठीक है, now here it is becoming a bit difficult for us to understand कि what the author is trying to say vis-a-vis Karl Marx or Sigmund Freud की styles. Is he in complete agreement with them, or is he trying to say कि यार तुम लोग ना बवाल कर रहे हो, okay? तुम लोग इतना वेटेज देते हो उस चीज को, इसीलिए उसका इतना महत्व हो चुका है. Actually they have no meaning without interpretation. So if you do not apply your interpretation वाला ज्ञान, अपना लॉजिक, अपना थिंकिंग उसके ऊपर, that event is useless, nobody will even think twice about it, and it has absolutely zero value in our lives. So I am inclined to think of this second part of line of thinking. Through this sentence, I believe that the author is trying to put forward a legitimate criticism of Freud and Karl Marx. पर चलो जाने दो, कोई बात, आगे चलते हैं. Okay, last paragraph is pretty important. Author says this act of interpretation, the ability to discover, to understand the meaning of something, it is not a by default unchangeable feature of your mind. Okay, it's not something that has absolute value कि हाँ भाई कुदरत ने हमें इतनी इतनी ताकत दे दी है इंटरप्रिटेशन की किसी हिस्से में हमारे दिमाग के, बस काम खत्म. नो, it is something mutable, it is something that we can you know
handle, change, evaluate according to the context, according to our needs. So keeping that in mind, author is saying कि देखो यार, interpretation, this act itself must be evaluated. ऐसा नहीं है कि तुम जब से तुम्हें समझदारी आई है एज अ चाइल्ड एज एडल्ट बस वही टेम्पलेट लेके तुम लाइफ लॉन्ग चल रहे हो. नो, इट इज समथिंग विच शुड बी टाइम टू टाइम इवेल्युएटेड, चेंज, मॉडिफाइड. तो कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट में, इन सम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये जो एक्टिविटी है इंटरप्रिटेशन की, दिस इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ लिबरेटिंग वाली फीलिंग, लिबरेशन वाली फीलिंग. अरे वाह, चलो पुरानी बंदिशें टूट गई, पुराने हमारे डेड पास से हम आजाद हो गए. We are now evolving, we are now progressing ahead in our society. But in some other situation, this act itself will not be very helpful. It's going to be pretty negative. Reactionary, impertinent, cowardly, and stifling. Okay, Shashi Tharoor light spotted. Chalo. So what is the takeaway from the last paragraph? Once again, 100% clarity nahi hai. I am okay with 80% clarity. कि the ability to carry out interpretation of something, it's not something unchangeable, it's not something that cannot be changed with time, cannot be modified. Rather, other is of the opinion that 100% it is in your control, and in some cases this is going to be very very positive, in some cases it's going to have fairly negative outcomes. ठीक है. और फर्स्ट हाफ ऑफ द पैराग्राफ, और अदर फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर में क्या बात की है कि आज की तारीख में इंटरप्रिटेशन इज प्रीटी मच कॉम्प्लेक्स. ओल्डर स्टाइल वाज रिस्पेक्टफुल, इट वाज सीकिंग टू बिल्ड अपॉन व्हाटएवर वाज रिटन. बट आज के तारीख में थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में हम जाते हैं. पहले ओल्डर स्टाइल में बिल्डिंग वाला एटीट्यूड था कि मतलब अगर आपको ट्री दिखता है तो यू वुड ट्राई टू इमेजिन कि अच्छा इसके ऊपर फल कैसे लगते होंगे, कैसे गिरते होंगे, ऑल दैट. बट टुडे स्टाइल इज लाइक पेड़ काटो, मुझे नीचे जड़ों से मतलब है. ओके, so this is the difference, and the way the author has used some kind of words, it seems like he is not in complete favor of the modern style of interpretation. ठीक है, चलो 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 आगे चलते हैं. I hope that you have understood the explanation. Let's go see what the questions are about. And if you have not hit the like and subscribe button, please do it ASAP. And now first question is here before us. What does the author mean by the interpretation is not blah blah blah, a gesture of mind situated in some timeless realm of capabilities? Last paragraph, closing paragraph, first sentence. So what is the author trying to say through this? It's simple that this ability to carry out interpretation can be changed with time. It's not static, it's not unchangeable, it is mutable, fairly malleable. So let's go take a look at options. A, interpretation is being evaluative of the meaning created by an authority. Wait, what? पहली बात तो ये सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल, मीनिंग निकाल भी लिया तो लेन देन क्या है ऑथर के बातचीत से? ऑथर को तो कहना है कि समय के साथ बदला जा सकता है, इट इज समथिंग क्वाइट अ लॉट इन कंट्रोल अपेरेंटली. ये क्या बातें कर रहे हैं भाई कि कोई तो एक ऑथोरिटी कोई मीनिंग बना के आपके सामने रख देगी, आप उसको इवेल्युएट करो. आउट. बी, interpretation is an act of mind which is situated in a changeless domain. Definitely not. This is absolute opposite of what the author is trying to say. He is saying जनता को ये गलतफहमी है, मैं जनता की गलतफहमी दूर करना चाहता हूं जी, कि अनचेंजेबल नहीं है. तो दिस इज व्हाट द पब्लिक विल बिलीव, एंड ऑथर इज लाइक कि नहीं, पब्लिक को गलतफहमी है, इसलिए आउट. सी, interpretation is about erecting another meaning on top of the literal one. Okay. Now you might read this sentence and you might say, अरे नहीं नहीं दिखा था नहीं तो passage में कहा है. Please read a little bit finely. This is not written over here. This is written over here. कि जो old style of interpretation था, पुराना तरीका ये काम करने का, that used to be erecting another meaning on top of the given. ठीक है. तो यहाँ पर to make sentence C correct, first of all, you will need old style of interpretation, ऐसी heading यहाँ पे. And secondly, that is not what is being discussed over here. We are discussing the ability to carry out this activity on a natural, broader scale. We are not concerned with old style, modern style, maybe future style. No, wrong. So misplaced context के तहत हम option C को out कर सकते हैं. D, interpretation is act of understanding. Okay, fair enough. Developed by timeless expert. भाई ये क्या टाइटन की घड़ी बनाते हैं क्या ये लोग? Whenever I read the word timeless and all, I don't know why am I reminded of Titan. Maybe it was a part of their marketing campaign way back when I was a kid. Seems like a core memory of sorts. Anyway, coming back,
तो नहीं, ऐसा नहीं है। टाइमलेस एक्सपर्ट कहा दिया है, रादर देर इज ओनली दिस वर्ड टाइमलेस यहाँ पर लिखा हुआ, but there is no mention of people who are timeless experts. Way too absurd out. So naturally, what is the answer? Answer option E. That interpretation is about revisiting and reinventing meanings. Correct. Absolutely bang on point. Please take a look at this green part which I have highlighted over here. Okay. It's a liberating act. Escaping the dreadful past, escaping the failed past, and revising, reinventing. Correct, correct. Everything is on point, and hence option E wins the game. Okay. So I hope that you understood the question and also got the answer correct. Let me know your score. Let me know your performance. How did you figure out the right answer over here? If your line of reasoning is drastically different than mine, please let me know. Maybe it's possible that you have a better take on what is written. ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन 2। Which of the following, okay, is not an act of interpretation? ठीक है, इसका मीनिंग पता है, देख रहा है विनोद, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है that four options are going to be act of interpretation। ठीक है, let's see whether we can find those four acts। A, searching for underlying themes in a historical document. Definitely you are trying to uncover some kind of hidden meanings. Maybe looks like some kind of modern style of interpretation. Definitely it is AOI, hence not the answer, because we are looking for not an AOI. Okay. B, finding underlying causes of social evil in a book. Correct. This is also trying to uncover some hidden, some implicit meanings in whatever is given before you. This is also falls under the act of interpretation. Out. Let's jump option now. E, investigating class conflict in Charles Dickens' novel. 100%. Here also you are trying to uncover some implicit messages that Charles Dickens may have tried to give through his story. This is actually अब पता नहीं किस तरीके से आप किया जाएगा। ओल्ड स्टाइल में भी गिर सकता है ये एक्ट ई, और मॉडर्न स्टाइल में भी जा सकता है। इट ऑल डिपेंड ऑन योर स्टाइल कि आप तोड़ दे रहे हो पूरा चार्ल्स डिकन का नॉवेल, पूरा चीर फाड़ कर दे रहे हो स्टोरी का, या फिर यू आर बिल्डिंग अ बिगर नैरेटिव विथ योर लॉजिक, विथ योर स्टाइल। so yes, but overall this is also an AOI out। The critical appreciation of a literary text, definitely you are applying your critical thinking, your logic। Okay, 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 not the answer, but naturally, option C once again is the answer. Labeling a text as blasphemous. Blasphemous actually very, very strong word, very negative word. Rather, this is a crime which is punishable by death in quite a few countries. Blasphemous का मीनिंग होता है आप गॉड का या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के सुप्रीम फिगर का इंसल्ट कर रहे हो। ओके, द वर्ड फॉर इट इज ब्लास्फेमी। कि नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत ग्रेव क्राइम है बहुत सारे रिलीजन में, एज आई सेड इट आल्सो कैरीज द डेथ पेनाल्टी इन सम कंट्रीज। तो किसी को भी नाम रख देना इज नॉट एन एक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ना। आप मेरे समझ लो सामने बैठे हो और मैं तुमको बोल देता हूँ कि तुम क्या गधे हो, am I applying any kind of logic or critical reasoning of mine? No, I'm just being pretty, क्या कहेंगे ना, stereotypical over here। Okay, so option C becomes the answer, and let me know whether you got it correct। If no doubts, let's go and take a look at what question 3 would be like। Okay, last question now। बहुत ही easy, काफी straight forward database question। Which of the following best differentiates manifest content from latent content? Latent content is something जो छुपा हुआ है भाई नीचे, manifest content है जो आपको आंखों से दिखता है, सीधी सी बात है। So what would be the answer? Answer would be A। manifest content is apparent, apparent मतलब दिख रहा है आंखों से, whereas latent content is hidden, yes, like this roots over here। ठीक है, बाकी सारे options fairly absurd, you should be able to reject them। Still, if you have any doubts, let me know in the comment section। I hope that you liked the video। If yes, please hit those like, share and subscribe buttons। Let me know your score in the comment section, and I'll see you in the next video। Tata, bye bye, and take care।